Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. And as you all know, we are on alphabet P. So let's continue with that. And within a day or two, I shall try to complete alphabet P as well. So for today, the first idiom is pie in sky, or we can say pipe dreams. ऑल राइट, अगर आपसे बोला जाता है ख्याली पुलाव, आपने सुना होगा हिंदी में बहुत बार ख्याली पुलाव, तो बस उसी से रिलेटेड दिस इडियम सेज पाई इन स्काई या फिर पाइप ड्रीम्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, ख्याली पुलाव. सो वी कैन से इल्यूजनरी, इल्यूजनरी कह सकते हैं या फिर हम इमेजिनरी भी कह सकते हैं. इमेजिनरी, जब भी इल्यूजन्स की बात कर रहे होंगे या इमेजिनरी प्लान्स की बात कर रहे होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, पाई इन स्काई या फिर पाइप ड्रीम्स, जिसका मतलब होता है इल्यूजनरी या फिर इमेजिनरी प्लान्स. ऑल्सो इनको हिंदी में बोला जाता है क्या, ख्याली पुलाव. ओहो, ख्याली पुलाव. ठीक है, तो अगर आपको याद करना है तो आप कैसे करोगे, पाओ रेफर्स टू, सॉरी पाई रेफर्स टू पुलाव. ठीक है, पाई रेफर्स टू पुलाव. अब बस उसी से याद आ जाएगा पुलाव से कौन सा इडियम रिलेटेड है हमारा, हिंदी में कौन सा मुहावरा रिलेटेड है, दैट इज ख्याली पुलाव. ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो आता है कि काश हम लॉटरी जीत जाए, यही आता है. तो बस लॉटरी से रिलेटेड एक सेंटेंस फ्रेम कर देते हैं, जैसे कि द idea of winning lottery is just pie in sky is often कह सकते हो या फिर just भी ठीक है, is just pie in sky but still many people buy the tickets with the hope of beating the odds. Beating the odds. See? ठीक है, सो जो हमारा आइडिया होता है लॉटरी जीत जाएंगे, ये हो जाएगा, वो मिलेगा, हम ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं. तो बस वैसा सब नहीं होना चाहिए. कुछ लोग करते हैं लॉटरी जीतने के लिए बट स्टिल दे थिंक कि अगर ऐसा हो गया तो क्या पता हमारा ही नंबर निकल जाए. तो लाइक दैट सॉर्ट ऑफ आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड इडियम, वी हैव द सेकंड इडियम सेज पिन मनी. पिन से रिलेटेड कल हमने एक चीज की थी, कल एक इडियम किया था, आज भी सेम इडियम है. अब देखो पिन का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, मैंने कल भी ये ट्रिक बताई थी. पिन का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी स्मॉल. ठीक है, छोटा सा ही होता है, कील का जो एरिया होता है दैट इज वेरी स्मॉल. सिंस द सरफेस एरिया इज स्मॉल, तो मनी की बात कर रहे हैं तो स्मॉल मनी मिलेगा हमें. ठीक है, तो वी कैन से दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. जब भी हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी की बात करते हैं तो वी कॉल इट पिन मनी. ठीक है, इसको आप हिंदी में लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, जेब खर्च. जितना अमाउंट आपको जेब खर्ची के लिए मिलता है, सो दैट इज कॉल्ड पिन मनी. सो in order to frame its sentence, we can say that she earns a bit of pin money by babysitting on weekends.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, कैसे? बेबी सिटिंग करा करा कर, या फिर हम कह सकते हैं क्या, वी कैन से दैट ही gets an allowance as pin money। मतलब थोड़े बहुत पैसे इसमें लिख रहे हैं कि थोड़े बहुत पैसे उसको मिल जाते हैं अलाउंस के लिए, क्योंकि उसे दूर आना जाना पड़ता है, या फिर अपने ट्रैवलिंग के खर्चे के लिए भी हम लिख सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं क्या, फॉर हिज डेली expenses while traveling. So this is pin money. पिन मनी मतलब थोड़ा सा अमाउंट ऑफ पैसा आपको दिया जा रहा है फॉर योर जेब खर्ची। यहाँ पर शी इज मैनेजिंग टू गेट a small amount of paisa by babysitting, and here he is getting an allowance as pin money for his daily expenses while traveling. So with this, moving on to the third idiom, we have the third idiom says pillar to post। पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर। लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जब आपको किसी सरकारी काम से कोई भी सिग्नेचर चाहिए रहते हैं तो आपको भगाया जाता है इधर एक काम से एक जगह से दूसरी जगह, या तो आप उसके ऊपर सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि जब आपको एडमिट कार्ड लेने रहते हैं या फिर कोई एग्जाम आ रहा होता है, तो आपका सेंटर अगर खो गया, सपोजली आपका सेंटर आपको नहीं मिल रहा, तो यू आर वेंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उससे भी रिलेटेड वी कैन फ्रेम द सेंटेंसेस। फॉर नाउ वी आर फ्रेमिंग अ सेंटेंस विच सेज द complaint was bounced from the complaint was bound from pillar to post in different departments So we have framed the complaint was bound from pillar to post in different departments। क्या होता है कि जब आपने कोई गलती कर दी होती है तो जो कंप्लेंट्स होती हैं वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाती रहती है, ठीक है। So the complaint was bound from pillar to post, or we can say with each department passing the buck। Yesterday only we did this idiom buck passing। तो बक पासिंग जो कल ही किया था, जिसका मीनिंग होता है क्या कि जो आपने गलती की है, यू आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर बात भी कंप्लेन की करें तो कंप्लेन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की, हमने हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, उन्होंने किया होगा, उन्होंने किया होगा, लाइक दैट, वैसी वैसी चीजें हो रही है। अब आपका होमवर्क रहेगा टू फ्रेम अ सेंटेंस कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जा रहे हो इन ऑर्डर टू गेट द सिग्नेचर, एंड दे आर सेइंग जस्ट गेट दैट, गेट दैट, गेट दैट, गेट दैट। So they are asking you to roam from one place to another, that is from pillar to from pillar to post। All right, another sentence, in order to frame another sentence, we can say that the team was shuttled
meeting with different officials, yet getting nowhere. ठीक है, अगर आपने केस फाइल किया हुआ है किसी भी कोर्ट के अंदर, मे इट बी डिस्ट्रिक्ट, मे इट बी हाई, मे इट बी सुप्रीम, तो what they do is they tend to take your papers, they tend to take your time and everything, and they ask you to roam from one place to another. That is, they ask you to do what? Pillar to post. So cases के sorry, courts के ऊपर भी also you can type a sentence, और official government के ऊपर तो yet again I have made a sentence, so you can do that as well. All right, moving on to the next idiom, we have the fourth idiom, which says plain as day. Plain as day का मतलब होता है easy to understand. So we can say that the solution to the problem is plain as day. Just follow the instructions. Plain as day तो बहुत ही ज्यादा इजी सा इडियम है, विच सेज प्लेन एज डे, जिसका मतलब होता है क्या? इजी टू अंडरस्टैंड. और वी कैन से दैट it was plain as day that she was upset. Her face showed it up. कुछ लोग होते हैं जिनका फेस बहुत ज्यादा रिवीलिंग होता है, दे आर लाइक सबटाइटल्स. ठीक है, तो सम पीपल्स फेसेस आर सबटाइटल्स to their because of their expressions or to their inner feelings. तो बस उसी के फेस ने क्या किया? That was plain as day, मतलब easy to understand that she was quite upset over something. So plain as day refers to easy हाँ, easy to understand. All right, moving on to the next idiom, we have the fifth one, which says play devil's एडवोकेट. प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट का मतलब बहुत ही ज्यादा यूज इडियम है, ऑल्सो वन ऑफ योर PYQs, तो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में यू कैन मार्क इट. सो प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है आर्ग्यू, टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट. There are certain officials or there are certain lawyers who just play devil's advocate. Why? In order to get time, in order to get their client more time. तो बस उसी से related आप एक sentence frame कर देना. The sentence that I am framing right now is let's play devil's advocate and imagine what our competitors might ask about our marketing strategy. ऑल राइट, प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या हुआ कि आपने आर्ग्यू करना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट. और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर द पर्सन इज आर्ग्यूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट. द पर्सन इज आर्ग्यूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट सो दैट क्वेश्चन आंसर होता रहे, बैक फॉरवर्ड क्वेश्चन आंसर होता रहे और चीजें निकल कर आती रहे.
सपोजिटली आपको देने जाना है इंटरव्यू, तो घर पे ही मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे सो दैट अगर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड। तो जैसे मॉक्स होते हैं, तो इन द सेंटेंस आई एम सेइंग, इन द सेंटेंस दे आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक द मॉक, and according to the idiom it says to argue just for the sake of argument. Now moving on to the next idiom, we have the sixth idiom, which says play for time. Play for time refers to make excuses, to make excuses. अब इसके लिए तो बहुत सारे idioms, बहुत सारे sentences we can frame. So for this we can frame so many sentences. For now we are framing what we can say, that the company is playing for time hoping that financial crisis will pass soon. ठीक है, सो प्लेइंग फॉर टाइम का रेफरेंस कहाँ से हो गया, आप टाइम के साथ खेल रहे हो, टाइम के साथ खेल रहे हो मतलब मजाक कर रहे हो, कुछ एक्सक्यूजेस बना रहे हो। तो उसी से रिलेटेड वी हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस कि कोई कंपनी थी जो डूबने वाली थी, फाइनेंशियल क्राइसिस इट वाज फेसिंग, जिसकी वजह से क्या हुआ, तो कंपनी वाज होपिंग कि ये सारे फाइनेंशियल क्राइसिस जो हमें अभी हो रहे हैं तो दे शुड जस्ट pass like that. Another sentence that you can frame on this idiom is like government officials again, they have the complete authority in their hands. Some do, I agree, but they still ask you to roam from one place to another, that is from pillar to post, and also दे गिव एक्सक्यूजेस कि आज नहीं हो सकता है, वी आर आउट ऑफ स्टेशन, या फिर आज ये नहीं करेंगे, आज वो नहीं करेंगे, या फिर कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल जाना रहता है, तो उनसे भी रिलेटेड आप सेंटेंसेस बना सकते हो। दे प्ले फॉर टाइम that we don't have, we are not willing to go to school because I'm not feeling well, or I am ill, or like that sort of sentences. My stomach is paining, I am having had headache, like that also the sentences could be framed. So this is the easy idiom. Another sentence could be framed by you. We are moving on to the next idiom, which says, the seventh idiom, which says play once is, मतलब अपना हुक्म का सिक्का चल देना, जो आपके पास पलटने वाला औजार था आपने वो यूज कर दिया। ठीक है, तो प्ले वंस एज का मतलब हो गया क्या, टू यूज वंस बेस्ट वेपन, ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं कि आपने अपना ब्रह्मास्त्र जो था आपके पास, that you have used. So in order to frame its sentence we can say that she played her ace by revealing the confidential information which changed the course of negotiation. अपना हुक्म का सिक्का यूज करने की भी एक अलग ही वो होती है कि यू शुड नो व्हेन टू यूज, हाउ टू यूज एंड वेयर टू यूज। ये नहीं है कि गेम शुरू हुआ एंड यू आर जस्ट प्लेइंग, supposedly you are playing uno and there are so many brahmas in that, like draw and +4, like those sort of reverse spin, all these are considered to be brahmas. तो ऐसा नहीं है गेम खुलते के साथ ही you are just splitting all those things. This is not possible, or this should not be done if you really want to win the game. So coming back to our game, which says play one's ace, meaning to use one's best weapon. Another sentence that we can frame is
The lawyer played her ace by presenting the evidence which made her win the case. All right, lawyer played her ace. So this was playing for time and playing one's ace. Now, moving on to the next idiom, we have the eighth idiom, which says play it by ear. मतलब आपने सुना और तभी रिएक्ट कर दिया, ये नहीं यू आर गिविंग मॉक्स, यू आर प्रिपेयरिंग, नहीं, आपने सुनना है एंड देन ओनली यू आर रिएक्टिंग. ठीक है, तो यू आर गोइंग समवेयर विदाउट प्रिपरेशन. और स्पीकिंग, वी कैन से स्पीकिंग समथिंग विदाउट प्रिपरेशन. और ऐसा कब होता है, जब आप इंटरव्यूज में जाते हो, यू जस्ट लिसन एंड देन यू से थिंग्स और देन यू जस्ट टेल थिंग्स. ठीक है, जो भी आपके साथ क्वेश्चन आंसर होते हैं. आई एम नॉट सेइंग यूपीएससी के इंटरव्यूज के बारे में नहीं, उसके लिए मॉक देना ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट थिंग दैट विल टेल यू हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ यू शुड बिहेव, all the ethics will be told to you in that thing. So that is important. I'm talking about the general interviews, that is the company interviews or the reference interviews, like those sort of interviews. तो उसके केस में you can frame a sentence by yourself. So in order to frame a sentence, at least one I can frame. So what we can say is, I'll play it by ear in the meeting and respond according to the discussion. And here also you can say that instead of speaking, you can say to do something. To do something without special preparation. कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, आपने कर दिया बस. ठीक है, देखो, अगर आप मुझसे मिलने के लिए आते हो तो यू विल नॉट बी गिविंग मॉक्स. नहीं करोगे ना मॉक कि प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी मिलने के लिए जाना है, लेट्स जस्ट प्रैक्टिस. ऐसा तो नहीं होगा. आप मुझसे मिलने के लिए आओगे, जो आमने सामने क्वेश्चंस होंगे विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू कि क्या पूछा जा रहा है या क्या किया जा रहा है, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ. तो वी कैन से दैट प्लेइंग इट बाय ईयर. प्लेइंग इट बाय ईयर का रेफरेंस बहुत जल्दी, बहुत ईजी है, कानों से सुना एंड अकॉर्डिंगली यू आर रिस्पॉन्डिंग. ठीक है, तो बस उसी से रिलेटेड आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस. Now, moving on to the next idiom, we have the ninth one, play to the gallery. मतलब to say some things, to say things that will make people admire you. कि कुछ ऐसी हरकतें कर दो, कुछ ऐसा बोल दो कि लोग आपको अरे वाह, अरे अरे सर ये तो आपने क्या ही कह दिया, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ आपके पीछे पड़ जाए, एडमायर करना शुरू कर दें आपको. तो ऐसी चीजें कौन करता है सबसे ज्यादा, आप कह सकते हो ऐसी चीजें करने वाले होते हैं पॉलिटिशियन. सो पॉलिटिशियन, इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, वी कैन से दैट द politician's speech was just playing to the gallery and offered no real
सब्सटेंस। या तो आप ये कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो क्या, स्टॉप प्लेइंग टू द गैलरी and be yourself. We respect authenticity. We respect authenticity. ठीक है, तो प्लेइंग टू द गैलरी का बहुत साफ साफ मतलब यहाँ पर नजर आ रहा है। गैलरी में के कौन से आइटम होते हैं? क्या गैलरी में वो आइटम्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं? नहीं, गैलरी में सिर्फ शो ऑफ वाले आइटम्स होते हैं, तो शो ऑफ नहीं करना चाहिए, यही बोल रहा है ये कि ऐसी चीजें जिससे कि लोग आपको एडमायर करें, अगर अंदर होंगी तो दे विल कम आउट इवेंचुअली, बट आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो प्लेइंग टू द गैलरी, गैलरी से ही आप याद करोगे क्या? गैलरी से आपको याद करना है कि ऐसी चीजें जो कि अंदर रखी हुई हैं, एंड विद दैट ओनली, जब चीजें अंदर हैं तो दे आर नॉट कमिंग आउट, यू आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग देम कि बाहर आओ बाहर आओ, तो वैसे नहीं करना है। सो वी हैव फ्रेम्ड ऑन बेसिस ऑफ पॉलिटिशियन एंड ऑल्सो लाइफ सीकिंग लेसन विच से स्टॉप प्लेइंग टू द गैलरी एंड बी योरसेल्फ, वी रिस्पेक्ट ऑथेंटिसिटी, और वी अप्रिशिएट ऑथेंटिसिटी भी कर सकते हो इन प्लेस ऑफ रिस्पेक्ट, यू कैन जस्ट कॉल अप्रिशिएट। ठीक है, तो these sentences could be framed. Moving on to the next idiom, we have the 10th idiom, which says pocket and insult. इंसल्ट हुई और आपने पॉकेट में रख लिया, मतलब बेयर, इंसल्ट को बेयर करना। तो सेंटेंस क्या फ्रेम कर सकते हैं? ही pocketed an insult and focused on his game. अब इसी से रिलेटेड आप अगले सेंटेंसेस फ्रेम करोगे। लेट मी गिव यू द हिंट। हिंट है कि दिस इज द वेडिंग सीजन। अब वेडिंग सीजन है तो आपके घर में भी कोई शादी वादी हो रही होगी, तो उस शादी में जाना एंड यू विल सी कि कुछ लोग करते हैं तमाशे, एंड विद दैट थिंग उनसे क्या होगा कि सिंस थिंग्स विल बी गोइंग ऑन बैड फेजेस, दे विल नॉट बी ऑन गुड टर्म्स, तो a person, we can say either from a person from a groom family or from the bride family, will be doing this thing in order to save the things, in order to lead the things to be to work smoothly. तो उनमें से कोई ना कोई आपको जरूर करता मिलेगा क्या? पॉकेटिंग एंड इंसल्ट, कि हो गया है, इट्स ओके, वी आर फाइन विद इट, लेट्स जस्ट मूव ऑन फॉरवर्ड एंड लेट्स जस्ट सेलिब्रेट द डे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस which says pocket and insult, that is bear and insult. So moving on to the next idiom, we have the 11th one, which says pour through the cold water. मतलब to discourage, किसी को discourage करना is like pouring the cold water. ठीक है, तो if you are discouraging someone by showing indifference, आप लिख भी सकते हो यहाँ पर by showing indifference, so that is called what? Pouring the cold water. In order to frame the sentence, we can say that we can say don't pour the cold water on her. She's worked hard to. एवं हवा में सेंटेंस हम बना सकते हैं कैसे? pour through the cold water, मतलब उसकी मेहनत आप बेकार मत करो, because she has literally worked hard a lot
on that particular thing. ठीक है, तो उसी से related we have framed a sentence which says that pouring through a cold water, मतलब कि किसी को discourage नहीं करना चाहिए by showing her indifference. जैसे कि कई बार हो जाता है कैसे, if you are working in a certain company और वहां पर you face certain indifferences, आपको नहीं पता, the back story of every person is not known to you, but still you create indifference, you make things difficult, even worse in certain scenarios, so you should not do that. ठीक है, so moving on to the next idiom, we have the 12th idiom which says public enemy number one. पब्लिक एनिमी नंबर 1 का मतलब हुआ someone of great threat to certain group, कह सकते हो किसी ग्रुप को या किसी कम्युनिटी को. If someone is of great threat to certain group or community, then you will be calling them what? Public enemy number 1. So in order to frame the sentence, we can say that, we can say what? The notorious gangster was considered public enemy number 1 by FBI. बहुत शैतान शैतान लोग होते हैं, तो बस उन्हीं से रिलेटेड एक इडियम भी है जो कहता है पब्लिक एनिमी नंबर 1, दैट इज समवन हु इज ऑफ ग्रेट थ्रेट टू सर्टेन ग्रुप और कम्युनिटी. अब जरूरी नहीं है कि वो लोग ही हों, वो कुछ भी हो सकता है. जैसे कि कह सकते हैं कि जो मस्किटोज होते हैं, दे आर पब्लिक एनिमी नंबर 1 फॉर द एरियाज दैट आर वाइडली कवर्ड विद डेंगू फीवर और मलेरिया फीवर. या फिर आप कह सकते हो कि सर्टन पोल्यूटेंट्स, केमिकल पोल्यूटेंट्स इन वाटर आर पब्लिक एनिमी नंबर 1 अगेन, बिकॉज दे आर पोल्यूटिंग द होल प्लेस. क्या पता वहीं से पानी आता जाता हो, या फिर अंदर की मेरीन जो लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसके लिए भी दैट कैन बी पब्लिक एनिमी नंबर 1. सो आई हैव प्रोवाइडेड यू 2 hints in order to frame 2 sentences on this public enemy number 1. Why I am asking about framing, why am I asking you to frame the sentences, because framing is important because it is one of your PYQs. ठीक है, सो PYQ में आया था इसलिए. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग विद आवर idioms, we shall be continuing with one PYQ we shall solve online. And with that, I hope you like my lecture, and do subscribe to our channel and do like and share. Thank you.